હેલો સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે આપણી સ્વ અધ્યયન પોથી જે નવી આવી છે એમાં ધોરણ 7ની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો જોઈએ. તો અહીંયા વિડીયોની શરૂઆત આપણે આપણી ઇકાઈ નંબર 2 હિન્દી તબિયાત તુમારી આતી હૈ. તો આજે એની સ્વ અધ્યયન પોથીનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તમે જો ઉપર એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે જેમાં એના કવિ છે રામ નરેશ ત્રિપાઠી, એના વિશેની માહિતી આપી છે. ત્યારબાદ કાવ્યમાં મેઇન હાર્દ એ પણ પેરેગ્રાફમાં સમજાવ્યો છે. તો અહીંયા ધ્યાનથી વાંચીને ત્યારબાદ આપણે જવાનું છે પ્રશ્ન નંબર 1 પર, જેનો અ છે સહી વિકલ્પ ચુનકર राइट का निशान कीजिए. नंबर 1, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो जवाब है जब छम छम बूंदे गिरती है. नंबर 2, कलियाँ दरवाजे खोलकर कब मुस्काती है? तो जब सुबह होती है. ત્યાં રાइट કરવાનું છે. नंबर 3, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का अर्थ क्या होता है? तो जवाब है तरंग. नंबर 4, सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सृजनहार. नंबर 5, सही शब्द चुनिए. અહીંયા જે 4 શબ્દો આપેલા છે એમાં યોગ્ય જોડણીવાળો શબ્દ હોય તો એ છે ચીડિયા. નંબર 6, શબ્દાર્થ की गलत जोड़ पहचानिए. તો અહીંયા જે સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા છે એમાં હરિયાળી, તો અહીંયા બંજર જમીન લખેલું છે જે ગલત છે, બરાબર. તો એ અહીંનો તો એ ઓપ્શન પર તમારે રાઇટ કરવાનું છે. આગળ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા અનેક એજ્યુકેશનલ વિડીયો મેં મારી વેબસાઇટ ઉપર પણ મૂકેલા છે. આ જે લિંક દેખાય છે એ જ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. તમે ત્યાં જઈને ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એક આવું પેજ ઓપન થશે પારુલ ક્લાસીસનું. તમે જો સાઈડમાં 3 લાઇન દેખાય છે, આ 3 લાઇન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે તમારી જોડે એક આ રીતનું પેજ ખુલશે, જેમ કે ગૂગલ ફોર્મ, જ્ઞાન સાધના, NMMS પરીક્ષા, PSC પરીક્ષા. તો આવા અનેક પ્રકારના વિડીયો મેં અંદર મૂકેલા છે. જેમ કે આપણે જોઈએ તો સ્વ અધ્યયન પોથી લખેલું છે. હવે તમે સ્વ અધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરશો તો તમારી આગળ એક આ પેજ ખુલી જશે, સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન વિડીયો જોવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો. તો તમે અહીંયા જેવા ક્લિક કરશો એટલે સીધું તમને અહીંયા વિડીયો જોવા માટે બટન પર ક્લિક કરો. તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી આગળ ધોરણ વાઇઝ આપણી જે સ્વ અધ્યયન પોથી નવી આવેલી છે એ દરેકના વિડીયો તમને અહીંયા જોવા મળશે. જો તમે ધોરણ 6, ધોરણ 7, ધોરણ 8 આ 3 ધોરણની સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન અહીંયા મૂકેલા છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈએ ધોરણ 6નું, તો અહીં ક્લિક કરો લખ્યું છે ને, ત્યાં તમે ક્લિક કરશો તો તમને સીધા યુટ્યુબ ઉપર ધોરણ 6ની પ્લે લિસ્ટ જોવા મળશે સ્વ અધ્યયન પોથીની. જો આવી ગઈ છે ને, તો આ રીતે તમે સીધા એના પ્લે લિસ્ટ ઉપર જઈ શકશો. તો આ રીતે તમારે અલગ અલગ એજ્યુકેશનલ વિડીયો જોવા હોય તો મારી વેબસાઇટ ઉપર તમે સીધા જઈને પણ જોઈ શકો છો. આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 1 ब, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए. जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है. तो आ रीते तमारी काव्य पंक्ति पूर्ण करीने अहीं लखवानी छे. आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. नंबर 1, सुबह होते ही चिड़िया के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाते हैं, कलियाँ खिलने लगती है और फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है. तो सवार सवाરમાં જે નજારો હોય છે એનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ જ રીતે પ્રશ્ન નંબર 2, हमें प्रभु की याद कब कब आती है? तो हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है. ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है? तो ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी बनने लगता है, जहाँ गंदगी, मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है और किसानों के खेतों को भी नुकसान होता है. बराबर. आगे જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન, छमछम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए. तो એવા રવાનુંકારી બીજા શબ્દો છે ચમચમ,
રીમઝીમ, હલચલ, ગડબડ, બીજા એવા ઘણા શબ્દો છે, તમે અહીંયા એને લખી શકો છો. આગળ प्रश्न नंबर 6, हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो हरियाली लहराने से किसान खुशखुशाल हो जाते हैं, हमारे जीवन में उपयोगी औषधियाँ, फल फूल सब चीज़ें आसानी से मिलने लगती है, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हरियाली अनिवार्य है. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 7, बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है? तो बारिश पानी की बूंदों के स्वरूप में धरती पर गिरती है और उस समय बिजली भी चमकती है. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो અહીંયા 4 શબ્દો જે આપેલા છે, તમારે એનો સમાનાર્થી શબ્દ નીચેના કોષ્ટકમાં શોધવાનો છે. તો જુઓ, આપણે એના સમાનાર્થી શબ્દો શોધેલા છે અને સમાનાર્થી શબ્દ અને આપેલા શબ્દ બંને પરથી આપણે એક એક વાક્ય બનાવવાનું છે અને જે તમારા બાજુના પેજ પર તમારે લખવાનું છે. તો જોઈએ કે અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે ખુશી, તેનો સમાનાર્થી છે આનંદ. आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ. तो બંને ઉપરથી આપણે એક એક વાક્ય બનાવેલું છે. એ જ રીતે दुनिया तो जगत, यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह जगत बहुत बड़ा है. नंबर 2, खुशबू तो सुगंध, मुझे गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है, तो मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है. आगे लहर तो तरंग, अचानक पानी में बड़ी लहर आई, अचानक पानी में बड़ी तरंग आई. आगे जो प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए. याद तो यादें, बराबर एक वचनનું બહુવચન થયું છે. હવે વાક્ય બનાવીએ, मुझे आपकी याद आती है અને બીજું છે मुझे आपकी यादें आती है. તો દરેકનું બંનેનું તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. હવે એ શબ્દ છે ચીડિયા, તો જે બહુવચનમાં છે, તો આપણે એનું એક વચન કરીશું ચીડિયા. पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पर चिड़िया बैठी है. आगे लहर, लहरें, सुबह सुबह खुशबू की लहर आती है, सुबह सुबह खुशबू की लहरें आती है. नंबर 3, बिजलियाँ तो बिजली, आकाश में बिजलियाँ चमकती है, तो आकाश में बिजली चमकती है. आगे જોઈએ कली तो कलियाँ, बगीचे में कली खिली है, तो बगीचे में कलियाँ खिली है. लड़का तो लड़के, वहाँ लड़का खड़ा है, वहाँ लड़के खड़े हैं. आगे प्रश्न नंबर 5 જેનો અ છે, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखी. तो हरा भरा, लहर तरंग, सिरजनहार तो प्रभु ईश्वर दोनों, मस्ती तो उसका अर्थ है आनंद उल्लास, चिड़िया तो पंछी अथवा पक्षी, जग तो दुनिया संसार. बराबर. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए. 1, वेदांत दौड़ रहा है. હવે કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે કોણ, તો कौन दौड़ रहा है. नंबर 2, धरती पर बारिश गिर रही है. कहाँ, ऊपर से प्रश्न बनाना है, बारिश कहाँ गिर रही है. नंबर 3, सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है, तो कब चिड़िया खुशी के गीत गाती है. नंबर 4, सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा, तो सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा. नंबर 5, शिकारी ने गोली से हिरन को मारा, शिकारी ने हिरन को किससे मारा. नंबर 6, मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया, तो कुत्ता क्यों खुश हो गया. અને नंबर 7,
मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। तो પ્રશ્ન બનાવવાનો છે मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बराबर। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6 ब। सही वाक्य के सामने राइट का निशान कीजिए। હવે જે 3 વાક્યો આપેલા છે, लड़कियाँ खेलती है, लड़कियाँ खेलती है और लड़कियों खेलती है। तो અહીંયા પહેલું જ વાક્ય સાચું છે, लड़कियाँ खेलती है। નંબર 2 માં सेहत के लिए मुस्काना ज़रूरी है। तो જે પ્રથમ નંબર છે એ જ શુદ્ધ રૂપથી લખેલું છે। નંબર 3 જેમાં બીજા નંબરનું શુદ્ધ રૂપથી લખેલું છે કે अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। આગળ નંબર 4 માં બીજા નંબરનું એ સાચી રીતે લખેલું છે કે લાખા ચકિત હો ગયા। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7 જેનો અ છે, निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ काव्य पंक्तियाँ लिखिए। भावार्थ અહીં આપેલો છે कि दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है, तब हे जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है। तो અહીંયા આપણે કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે કે जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। नंबर 2 में જોઈએ જે ભાવાર્થ આપેલો છે कि सुबह होते ही कलियाँ अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है और कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है। तो અહીંયા એની કાવ્ય પંક્તિ આવશે कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7 નો બ। નિમ્નલિખિત पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। હવે પંક્તિ આપી છે અને આપણે એનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो અહીં આ કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ છે कि चिड़िया भोर से जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे कि वे खुशी के गीत गा रही है। तो તમારે આ રીતે એનો જવાબ લખવાનો છે। આગળ જોઈએ નંબર 2, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो એનો ભાવાર્થ છે कि वर्षा ऋतु में छम छम वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है।